Good morning to all of you. In my last video, I have told you statement of Coulomb's law and mathematical formula of Coulomb's law. और हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि Coulomb's law सिंपली एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पे ही काम करता है. कूलम्स लॉ का डेरिवेशन किसी भी लॉजिक से नहीं निकला है. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशंस. सो इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी लॉजिकल मेथड. नाउ कूलम्स लॉ का हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लिखा था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 upon R square. Meaning of R, separation between 2 point charges. Meaning of Q1, that is charge of first point size body. Q2, charge of second point size body. Now K, constant of proportionality. F means force between two charges. Now K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Now meaning of epsilon naught, electric permittivity. Now electric permittivity of free space. Now what is the value of K in SI system? That is 9 into 10 power 9 in SI system. In CGS, value of K is 1 in CGS system. Then after I told you vector form of Coulomb's law, that is K Q1 vector R upon R cube. Now this is vector form of Coulomb's law. And after this, last time in last video I have told you basic features of Coulomb's law. Number 1 feature of Coulomb law is that it is 1-to-1 interaction force. 1-to-1 interaction force का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, it means we have discrete arrangement of multiple charges. और हमें सिर्फ फोर्स किसके बीच में निकालना है? बिटवीन Q1 एंड Q2. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. नाउ इट इज फोर्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज. बट देयर इज Q3 एंड Q4 आल्सो. तो जो फोर्स हमने Q1 Q2 के बीच में निकालना है उस फोर्स की वैल्यू Q3 Q4 के होने से चेंज नहीं होगी. इट मींस देयर इज नो चेंज इन वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q3 एंड Q4. इट मींस ये फोर्स इन दोनों की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. सो इट इज individual force between Q1 and Q2. It means here we have 1-to-1 interaction between two charged bodies. One is Q1, other is Q2. तो ये सेम प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ग्रेविटेशन में. Force between Earth and Moon does not change due to presence of other planets. It means ये दोनों चार्जेस उसी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे
इन दोनों के बीच का फोर्स Q3 Q4 के होने से चेंज नहीं होगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कूलम्स लॉ, number 2 important feature of Coulomb's law, it will obey Newton's third law. It means in Coulomb's law we will have action reaction pair of forces. How it can be possible? Let us discuss कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेगा, हम चेक करते हैं। Now let us take plus Q1 and plus Q2, both are separated by a distance r. Now both are positive, it means there is like charges, as we know that like charges always repel each other. तो Q1 किससे रिपेल होगा? Q2 से, और Q2 किससे रिपेल होगा? Q1 से। तो यहाँ फोर्स क्या बनेगा? F21, और यहाँ फोर्स क्या बनेगा? F12। F12 का मीनिंग फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड एंड F21 का मीनिंग फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन। तो यहाँ पर F12 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज K Q1 Q2 upon R square. In the same way F21 की वैल्यू क्या आएगी? K Q1 Q2 upon R square. Now both forces are equal in magnitude and both forces are opposite in direction. So in vector form they are written as F12 K Q1 Q2 F21 upon RQ and F21 K Q1 Q2 upon RQ vector R12. Now as we know that R21 is equal to negative of R12. R21 is negative of R12. Then after forces can be written as F12 equal to minus F21. If it is action, then it is reaction. अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। This is vector form K Q1 Q2 upon R cube. R vector, that is indicators 21 F21 K Q1 Q2 vector R12 upon R cube. So both forces are equal in magnitude but opposite in direction. So both will make a pair of action reaction forces. Now third feature of Coulomb's law we can discuss. Third feature of Coulomb law, that is, it is conservative in nature. It is conservative in nature. So we can write down Coulomb's force is conservative in नेचर। अब भी कंजर्वेटिव क्यों है नेचर में, इसका रीजन क्या है, हम इसको क्यों बोलते हैं इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ यू कैन टेक एग्जांपल, वी हैव न्यूक्लियस एट सेंटर ऑफ एटम एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। नाउ
there is electrostatic force. There is electrostatic force between nucleus and electron. On electron we have negative charge, on nucleus we have positive charge. So electron will attract toward nucleus. So this is electrostatic force between nucleus and electron. Ze, charge on nucleus. Ze, charge on nucleus, that is charge on electron. R means radius of electron orbit. Now work done by this electrostatic force in closed path will be 0. Work done by this electrostatic force in closed path will be 0, as we know that force into displacement into cos 90 and it is equal to 0. It means जब इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर, और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल बनेगा? दैट इज 90 डिग्री. तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? F इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos angle between force and displacement, that is 90, and work done will be 0. So electrostatic force is conservative in nature because in complete closed path work done by this electrostatic force is 0. Now number 4 important feature of Coulomb's force is that this is all about third feature, that is Coulomb's force is conservative in nature. Number 4, it is short range force as compared to force of ग्रेविटेशन. तो कूलम फोर्स आपका, कूलम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में शॉर्ट रेंज कैरी करता है. इसका मीनिंग ग्रेविटेशन तो आपका मून और अर्थ के बीच में है और दोनों के बीच में सेपरेशन कैसा है? वेरी वेरी लार्ज. बट इतने बड़े सेपरेशन पे कूलम फोर्स आपका डोमिनेट नहीं करेगा. तो कूलम फोर्स आपका शॉर्ट रेंज फोर्स में आएगा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. देन नंबर 5, कूलम फोर्स, कूलम्स फोर्स depends on nature of medium between two charges. कूलम फोर्स चार्जेस के बीच में मीडियम होगा उस पे डिपेंड करेगा. इसका मीनिंग कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस. दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम किस क्वालिटी का है? मीडियम में क्या है? मीडियम इंसुलेटिंग है, कंडक्टिंग है, एयर का है, वाटर का है, किस चीज का मीडियम है? उसके अकॉर्डिंग फोर्स आपका डेवलप होगा, फोर्स की वैल्यू डिसाइड होगी. तो अब हमें चेक करना है कि फोर्स आपका मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है. ये फोर्स आपका मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है? नाउ एज वी नो दैट force
between two charges Q1, Q2 when they are placed in air with separation R can be written as K Q1 Q2 upon R square. Now K का मीनिंग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा क्योंकि मीडियम एयर का है. Q1 Q2 upon R square. Equation number 1. Now in second case, if we have material medium, if we have any type of material medium between Q1 and Q2, then for any other medium except air, this force will be written as 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Equation number 2. Now we can divide these two equations. F air upon F medium, F air upon F medium, that is equal to epsilon upon epsilon naught, epsilon upon epsilon naught, and that is equal to epsilon R, and that is equal to Kd. Meaning of epsilon R, relative permittivity of medium. Meaning of Kd, that is dielectric constant. तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम F एयर और F मीडियम को इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? epsilon upon epsilon naught. Now this is electric permittivity of any other medium, and this is electric permittivity of free space, or that is electrical permittivity of air. Now epsilon upon epsilon naught, that is equal to epsilon R. ये सेम फॉर्मूला, ऐसी सेम कंडीशन आपने 9th क्लास में स्टडी की थी इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. तो अगर आपको याद हो तो आप फॉर्मूला कैसे लिखते थे? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. उसी टाइप से हमने यहां लिखा है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर. नाउ इट इज dielectric constant. What is the meaning of dielectric? Dielectric are insulators. Dielectric are insulators. Dielectric हमेशा Q1 Q2 की इंटरेक्शंस को कम करेंगे, जिसकी वजह से कूलम फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, उसका डोमिनेंस कम हो जाएगा. अब यहां चेक करो आप, अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम मीडियम चेंज करते हैं then F medium is equal to F air upon Kd. It means force between two charges in any other medium is equal to force between two charges in air upon dielectric constant of that medium. तो फोर्स की वैल्यू आपकी पहले से डिक्रीज हो चुकी है. अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. न्यूमेरिकल हम एक चेक कर लेते हैं कैसे आएगा. नाउ लेट अस टेक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ लेट अस टेक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक constant. Now suppose we have two charges Q1 Q2, both are separated by distance r, and both will experience a force F between each other
Now medium has been changed. Medium has been changed. सेपरेशन को हमने सेम रखा है. Then find out new force between Q1 and Q2. We have given dielectric constant of new medium as 81. It means initially two charges are placed in air. Force between two charges F था. अब हमने मीडियम चेंज कर दिया, सेपरेशन सेम रखा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे दिया दैट इज 81. तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे F न्यू इज इक्वल टू F अपॉन 81. दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इस टाइप से यहां यूज करेंगे. नाउ बाय दिस फॉर्मुलेशन वी कैन यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Now take next numerical. Take next numerical. Numerical number 2. We have given two charges Q1, Q2 having separation R and both are having force between each other that is F. Now medium has been changed. Now medium has been changed. In new medium, dielectric constant is given, that is Kd equal to 9. So we have to find out at what separation we can place Q1 and Q2 in new medium of dielectric constant 9 so that both will experience same force F. Both will experience same force F. It means initial force is equal to final force. Now again check conditions of this numerical. We have given two charges Q1 and Q2. Both are placed at separation R and both will experience force F between each other. Now medium has been changed. So at what separation we can place Q1 and Q2 so that both will experience same force F as they experienced in initial condition. Now dielectric constant of new medium is given, that is 9. तो हमें अब हमें यहाँ पर न्यू सेपरेशन फाइंड आउट करना है. इट मींस हमें यहाँ पर Q1 Q2 के बीच में फाइनल सेपरेशन फाइंड आउट करना है न्यू मीडियम में. तो हम इक्वेशन रखेंगे for first medium F equal to K Q1 Q2 upon R square. Now K is written as 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. एक तो ये मेथड है कि हमें इक्वेशंस को डिवाइड करना और आंसर निकाल लेना है. एक इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी हम ट्राई करेंगे इसके बाद. पहले एक बार ये कर लें. देन F न्यू or F medium that is equal to F that is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 R new square. Now that is equation number 1 and equation number 2. Now dividing both equations F से F cancel हो जाएगा, 4 pi से 4 pi cancel हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आंसर आएगा 1 upon 1 that is R square nu upon R square epsilon naught, that is 1 upon 1. It is equal to R square nu upon R square into epsilon upon epsilon naught.
now it is r square nu r square into dielectric constant Kd. Now we know the formula of dielectric constant, that is epsilon upon epsilon naught. Now r square nu is equal to r square upon Kd. Now r nu is equal to r upon under root Kd. So it is r upon under root 9. Now r nu becomes r by 3. R nu is equal to r by 3. तो आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मूलेशन को, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूलेशन क्या है। फॉर्मूलेशन में आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो आप रीचेक कर सकते हो। सिंपल वन इक्वेशन आपकी ये थी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर, देन नंबर 2 फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम। हमने दोनों को डिवाइड किया, फोर्स की वैल्यू दोनों जगह सेम रखनी है हमें, F से F कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगी और हम यहां से निकाल लेंगे R nu equal to R upon 3. Now by this formulation we can solve this numerical. Then after we have another method of this. We have another method for solving this numerical. New method is, as we know that F proportional to 1 upon R square. Now F proportional to R square nu, and we know that F nu is also proportional to 1 upon Kd. Now we can find out value of R nu. We have two equations. F nu is proportional to R square nu and Kd. By dividing these two equations, what we will have, F upon F nu, that is R square nu into Kd upon R square. Both are equal. We have given 1 by 1, that is R square nu into Kd upon R square. Now we can find out R nu is equal to R by 3. तो ये एक शॉर्टकट मेथड है। हमें मालूम होना चाहिए कि कूलम फोर्स आपका सेपरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, उसी टाइप से F न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर न्यू एंड F न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Kd। ये फार्मूला मैंने कहां से लिया? As we know that F air upon F medium is equal to Kd. It means F medium is inversely proportional to dielectric constant. अब दोनों को डिवाइड करेंगे और वही सही आंसर हमें मिलेगा R by 3. So this is second method of this numerical. Then we have next feature of Coulomb's force. Next feature of Coulomb's force, number 6. It will obey inverse square law. कूलम फोर्स हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा?